Good evening. My name is Anubhav Srivastav, and I bring to you my second video in this series from Business Brewery. It's been the season of ChatGPT, and just to decode what's happening in the financial markets over the last 1 week, I thought I'd take some help from our favorite AI, and it spewed out an interesting little poem for us. And it goes like this. A report has caused a stir. On Adani, it made a blur. Allegations so bold and vast has the stock market in contrast. Sensex and Nifty dipped so low, making everyone's future uncertain, don't you know? But Adani Group fights back with might, calls the report a malicious plight. Investor, be wise and take care. Before any investment decision, do keep a fair share. For the future is uncertain, that's for sure. But one thing we know is there's always a cure. That was an interesting limerick. But on a more serious note, the markets were all over the place. और आप अगर एक शेयर बाजार में निवेशक हैं, सो एक टाइम तो ऐसा ज़रूर आया होगा जिसमें आपको ऐसा लगा होगा कि आगे क्या करें, क्योंकि काफ़ी पैनिक थी मार्केट में. सो पहले तो ये देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या. बजट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो उसको हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे इस बार. और क्या रिपोर्ट थी, उसके बाद क्या हुआ, शेयर प्राइसेस का क्या हुआ, और इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ा, यानी ब्रॉडर मार्केट पे आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर क्या लाइकली इफेक्ट पड़ा होगा. सो पहली चीज़ तो ये थी कि एक हिंडनबर्ग करके एक अमेरिकन कंपनी है जिसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें सजेशन दिए गए कि जो अडानी ग्रुप हैं उनके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी कुछ सही नहीं है. अब उस रिपोर्ट को लेके इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची. अडानी के शेयर्स गिरने लगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट काफ़ी कुछ इंडेक्स थे, मिड कैप इंडेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, वो भी हल्का फुल्का नीचे गए थे. और उसके बाद जो थे थोड़ी सी रिकवरी भी हुई, लेकिन अडानी के शेयर्स नहीं रुके. इन द मीन टाइम उनका एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था जिसमें कुछ उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स बिकने वाले थे, वो फुली सब्सक्राइब हो गया. और उस सब्सक्रिप्शन के बाद भी जो उनके शेयर्स थे उसमें उनकी गिरावट होती रही. एज अ रिजल्ट अडानी डिसाइडेड to be fair with the investors, and they decided to return the money and cancel the offer, which is a good thing to do. But what was the real effect on the stock markets or on the broader investment landscape? Because everybody gave the budget a big thumbs up. Someone said 11 on 10, someone said 15 on 10. So great feedback from market participants on the budget. So just to share with you a few interesting statistics on what happened to the markets over the last 1 week. That is the 5 working days that were there. Nifty was up 0.88%. Now this is the data coming in from Google Finance, but you can check it from any of these websites that are there, and you'll find some very interesting things out there. Sensex was up 2.35%. Banks, which were supposed to have a big hit coming in from exposure to many different companies, including Adani companies, was collectively up 2.1%. Now, just to put that in perspective, some of the best interest rates that you get on bank deposits, 7.5% for the year. So these returns are just coming to you in 1 week, which is a third of 7.5%. The next 50 index, which had the biggest exposure to the so-called Adani stocks, Adani Group stocks, was down just 1.87% for the week closing Friday today. So what is the moral of the story? Couple of things. One, don't just go by the headlines that are screaming at you from either the TV channels or the various financial news media sites, or in friends conversation, or the general noise that floats around. Do your research. क्योंकि होता क्या है कि हमारा ध्यान जो है वो उन चीज़ों पे नहीं रहता है जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए, और उन चीज़ों पे चला जाता है जो सेंसेशनल होती हैं. Right? Nobody is wrong. It's just that what you perceive is important for you to take decisions on
investments that you have in your own benefit. Second thing, जब आप अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं तभी आप एक अच्छे डिसीजन ले पाते हैं कि आपको करना क्या है. अगर आपने पैनिक में अपने शेयर्स बेचे होते या अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया होता इन पार्ट और इन फुल, सो चांसेस हैं कि आपको इस ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिलता और आगे जाके भी आपको उस ग्रोथ की जो कंपाउंडिंग होती है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता. तीसरी चीज, delve a little deeper into what the numbers are saying, right? और ask your financial advisors कि इसका मतलब क्या है, हमें करना क्या चाहिए. क्योंकि अगर आप ये देखें कि पिछले एक क्वार्टर में जितने बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं, कंपनियों के रिजल्ट हैं, वो ब्रॉडली ठीक ठाक ही रहे हैं, राइट? इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हैं. यूएस में थोड़ा सा अलग माहौल रहा है और सबके अगर इतने स्टेलर रिजल्ट्स रहे हैं, अब अगले क्वार्टर में पता चलेगा कि इन कंपनियों की एक्चुअल सिचुएशन क्या है. बट हमारे हिसाब से एक्सपोजर, जैसे एसबीआई ने कहा है कि 1% के नीचे एक्सपोजर है, दैट्स अंडर 1% एक्सपोजर टू द अडानी ग्रुप कंपनी, सो इट वोंट रियली मैटर दैट मच. देन द rest of the banks also seem to be okay. Growth story आपकी बरकरार है. So what are we really saying today? That when you have an investment plan, you stick to that investment plan. You don't bother about the noise that is coming out of the market, which is not saying that you don't listen to events. You must listen to events. You must listen to what's going on in the broader context. You must also analyze them, or if you don't have the time or the energy to analyze them, ask people, then take measured, understood decisions, but always stick to your longer term plan, right? Next important point is कि जैसे आपने देखा है कि indexes तो ज़्यादा effect हो ही नहीं है. That means diversification ज़रूरी होता है. अगर आप किसी फंड में हैं तो देखिए कि आपके फंड में डाइवर्सिफिकेशन है, या आप इंडेक्स खरीद रहे हैं ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स के जरिए, तो दोनों चीज़ों में आपका ही फायदा होगा. क्योंकि अगर एक स्टॉक जाता है, 2 स्टॉक जाते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ आपको फर्क पड़ेगा नहीं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, once you have a plan, once you have a diversified portfolio, you will always be better off in the long term than people that either trade frequently or panic when the markets are not good. Moral of the story, never miss the forest for the trees. Thank you so much for being with me. Next time we'll discuss a little bit more about what some of the budget proposals mean from a taxation perspective for specific segments like seniors or like HNIs or others, and what can you do, what sort of objectives must you have to make sure that your longer term income and wealth plans are on track. Thank you very much.